IR in bioinformatics. What is importance of IR in bioinformatics? Information retrieval की bioinformatics में क्या अहमियत है और किस किस मकसद के लिए यूज होता है? IR at several levels can be used in bioinformatics, such as for understanding of evolutionary information. Evolutionary means कि अगर हमारे पास दो sequences हैं and we want to find out what is evolutionary or hierarchical information or relationship between these two sequences, then we can have a IR system which will help us to identify this information. Similarly, it can be used for several other informations which are presented in this slide, such as genomic information. Genomic information is related to our DNA sequences, or taking examples of different DNA sequences, what are their relationships between these sequences. Then we have structure information. Structure information is mostly used for protein sequences. Then expression information and functional information. So as we have seen several times, that functional information is very, very important for proper understanding of protein sequences and several other macromolecules. So हमारे जो proteins होते हैं, for example, just to elaborate, उनमें दो किस्म की चीज़ें थी, structure and then function of those structure information. तो इन दोनों चीज़ों को understand करने के लिए और इनसे relevant information को find out करने के लिए IR systems can help us. So some of the retrieval basics might be we have defined before that what is browsing and what is searching. So browsing is something when we don't have a specific objective in mind. इससे मुराद क्या है कि हमारी कोई specific query नहीं होती, we don't want to retrieve some specific data. That is very generic type things कि हम कोई भी query लिखते हैं और उससे relevant generic information को पढ़ना शुरू कर देते हैं. Then searching. Searching is for looking for particular information. अब जो सर्चिंग है दैट इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक. ऑन द अदर एंड ब्राउजिंग वाज जेनेरिक. जेनेरिक से मुराद ये है कि जनरल क्यूरीज होंगी, और सर्चिंग से मुराद क्या है कि स्पेसिफिक क्यूरीज होंगी कि जो चीज़ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं सिर्फ उसके बारे में क्यूरी इनपुट करेंगे. नाउ वेन एवर वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज़ कॉल्ड की. की क्या चीज़ है? की बेसिकली हमारी क्यूरी भी हो सकती है, या की वो चीज़ है कि हमारी क्यूरी में से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. Just for example, if I write a query on Google that Lahore is beautiful. Now in this Lahore is beautiful, although this is a sentence, what are our keys? Lahore and beautiful. So अब हमारे पास जो results retrieve होंगे वो ऐसे results आएंगे जहाँ पर हमारे documents में ये show किया होगा कि लाहौर beautiful है, यानी कि लाहौर beautiful ये दो words use होंगे और third is जो है वो neglect कर दिया जाएगा. अब इन दो words की मदद से हमारे पास different results आएंगे. For biological sequences, we can say that keys can be names of different genes, name of different DNA or RNA or protein structure molecules, sequences of genes, or any other information such as our structure information in case of proteins, or different motifs or domain type information which is relevant to proteins again. Now sequence-based searching. Now in sequence-based searches, what happens is that we can have either individual sequences. What are individual sequences? They are combination of bases which are from 4 different bases as we have already seen. Then we have gene products. Gene products are basically some output of our gene sequences. Now what information or what retrieval we can do if we have given sequence and we can find out what are different homologous sequences to a given sequence. Similarly, we can use it for forensic sciences, and this can be applied to other macromolecular sequences also, which are from different domains. Then another example or sequences from other domains rather than DNA are protein sequences. As we know that protein sequences are combination of amino acids, so we can search or we can retrieve documents based on amino acids alone or protein sequences or nucleotide sequences. These can be messenger RNA, then cDNA or cDNA and different other protein sequences. Another important thing is that we can look for complete sequences or fragmented sequences. So suppose we have a sequence which is 20 length long, so we can search for the complete 20 length long sequence. Or we can use fragment sequences. Fragment means we can convert it into different parts and then we can search. For example, in DNA we saw an example of that intron, exons and supply side thing. So we can search introns independently of extrons
and exons, and similarly independent of supply site. So we can look for small and large differences between the given sequence and the test set sequences. So what are different things we want to know about sequences? So again, as I said earlier, that if we have a given sequence, we want to find out what other similar sequences are available in our test set collection, और how close is the best match, कि हमारा जो given sequence है उसके साथ कौन सा best closest match है. अब इससे मुराद ये है कि instead of saying that our sequence has a 100% similar sequence, we will look at कि कौन सा ऐसा sequence है जो nearby similar है. Might be now this nearby similarity can be 70%, 60%, 50% and so on. So what is the significance, कि इसकी importance क्या है, कि क्या इनमें domains और motifs जो हैं क्या वो similar हैं, कितने % जो है वो similarity है, that is related to significance. Then we have this evolutionary information. What is this evolutionary information? कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है तो वो कौन कौन से पार्ट से होते हुए हम तक पहुंचा है. फॉर एग्जांपल इन एवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन विच वाज रिलेटेड टू फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, कि हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी हायरार्किकल इंफॉर्मेशन है, कि क्या हमारा डाटा एक हायरार्की को फॉलो कर रहा है, कि फर्स्ट देयर वाज अ टॉप नोड, देन लीफ नोड, एंड देन गोइंग ऑन देयर आर इंटरनल नोड्स इन बिटवीन लीफ नोड एंड टॉप नोड और रूट नोड. तो वो कौन सी इनर नोड्स हैं या कौन सी इंफॉर्मेशन है दैट हैज़ बीन देयर फॉर आवर गिवन क्यूरी एंड आवर टेस्ट सेट डॉक्यूमेंट्स. सो फाइनली हाउ डू वी नो अबाउट दैट जीन, कि अब वो एक जीन को अगर हमने अंडरस्टैंड करना है विद द हेल्प ऑफ IR सिस्टम, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नंबर 1 इज बेस्ड ऑन इट्स सीक्वेंसेस अलोन. सीक्वेंसेस क्या होंगे, कि DNA के लिए सिंपल बेस पेयर के सीक्वेंसेस, प्रोटीन्स के लिए अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस. सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन. स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स वी हैव 3D स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, कि 3D स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या हमने जो क्यूरी दी है दैट गिव्स अस रेलिवेंट रिजल्ट्स. एंड देन फाइनली वी हैव फंक्शनल इन्फॉर्मेशन. So this functional information is our molecular, cellular and disease related information which can be captured or which can be retrieved by our IR systems.